welcome Karan. Thank you so much for joining us. It's a pleasure. Sorry, I'm not supposed to be nice to anyone. That's my mood. That's my expression right through the traitors. Okay. I cannot be nice to you. I cannot wish you, and do not expect any pleasantries. But still, can I compliment you on the neck piece that you're wearing? No. That's against the format. Okay, I have one more thing to go. This is the best birthday return gift that you could give all of us. Belated happy birthday to you. Thank you. I got that. I got that. Thank you, Karan. Listen, I can't. It was very tough because this was like a show that I had to be literally like a disciplinarian, a principal, not only following the format because the format is outstanding and the best format of any reality show I think that has ever existed on planet Earth, but it is so tough because sometimes you also want to scream and shout at people because they are being absolutely idiotic and like literally like not seeing it, not reading the room. But that's what the great part of this game is, that it is like it's a mind beep. Like literally, like it really can mess your mind and make you like I used to go back every night with sleepless nights, like wondering what the hell's going to happen the next day. It keeps you on the edge. It's like a thriller, relentless thriller. Now that try and keep that tone Right. intact. मुन्ना भैया मर गए और तुम डर गए. पाताल लोक made you question धरती के लोग. Family man made you trust no man. We saw you say these lines in the teaser which dropped a few days back, and it created definitely quite a lot of buzz where you hinted at what we can expect from the show. And you did spill some beans earlier as well, but we want to know what's in store दर्शकों के लिए. दर्शकों के लिए मैं क्या कहूँ, आप दूसरे कैप्टिव रियलिटीज देख चुके हो, वहाँ बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना तो होता ही है. यहाँ थोड़ा बहुत भी हुआ था, लेकिन इसमें दिमाग की सख्त ज़रूरत है. ये जो है ना, ये ऐसा शो है जो आपको खुद नहीं पता कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा. कुछ नहीं जानते आप. जैसे कि है, ये एक थ्रिलर है, एक मर्डर मिस्ट्री है, ये सब दोनों चीज़ों का मिश्रण है. इसमें 20 प्लेयर्स है. हम इन्हें कंटेस्टेंट्स नहीं बुलाते, इनको प्लेयर्स बुलाते हैं. और 3 ट्रेटर्स हैं, तो फिर ऑफ कोर्स मैथमेटिकली 17 इनोसेंट्स होंगे. तो रोज उन 3 जो ट्रेटर्स हैं वो उनको इनोसेंट की एक्टिंग करनी है. और इनोसेंस का जो है ना, जी आंखें हर जगह जा रही है कि ट्रेटर कौन है. तो जैसे कि हमारे मंत्रास हैं शो में कि यू नो कि ट्रस्ट इज रेयर, धोखा एवरीवेयर. आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. हमने रिश्ते तोड़ते हुए देखे हैं, फ्रेंडशिप्स उजड़ते हुए देखे हैं. बहुत सारा जो ड्रामा एक्चुअली इमोशन से आता है, क्योंकि वाकई जब आप एक साथ रहते हो इतने दिनों के लिए तो एक इमोशन बन जाता है. फिर जब आपका दिल टूटता है, जब आपको लगता है कि ये तो धोखा है मेरे साथ, और वो आप पर्सनली ले लेते हो, आप भूल जाते हो कि ये आप किसी गेम का हिस्सा है. इतने पर्सनल हो जाते हो कि मैं भी होस्ट के नाते इतना ज़्यादा पर्सनल हो गया था. तो कभी कभी मैं बोलना चाहता था, भैया ये इनोसेंट है, इनको बाहर मत निकालो, लेकिन वो मैं कहना चाहता था, फिर भी मेरा एक्सप्रेशन ऐसा स्ट्राइक था. I want to tell you guys, this is a roller coaster ride. आप जब देखोगे, और Amazon Prime हर थर्सडे को 3 एपिसोड्स ड्रॉप कर रहा है, आपको गुस्सा आ जाएगा. आपको चाहिए कि इसके बाद मुझे देखना क्या होगा. But listen, that's why we've kept it like that, because you know तरस और तड़प होनी चाहिए. इतना ऐसा लगा कि ऑलरेडी द ट्रेटर शुरू हो चुका है हमारे लिए. क्या जिस मतलब है तरीके से शुरू हो आप चुका है? मैं आ गया हूं तो हो चुका है ना. absolutely, and but you know, deliciously brutal. Now this sounds like an absolute strategic play, but we want to know what happens in the traitors. How does the game progress? Well, as I've told you that I'm the master of ceremonies, we're in a location very far removed, which actually by night looks kind of spooky and you feel you could be in a haunted house. Not to say the location we're at was a haunted house, just putting it out there. It's beautiful, that property. But the atmosphere, वहाँ जो वातावरण है, वहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है. वातावरण. तो जाहिर है जब मैं पहुंचा और जब मैंने सबको वेलकम किया, हमारे 20 सेलिब्रिटीज जो आए थे, तो उनको पता था कि ये एक राइड होने वाला है. तो फर्स्ट these 20 guys come in, एंड उसके बाद मैं जो हूँ, मैं 3 ट्रेटर्स को चुनता हूँ जब सब ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं. They are all blindfolded. You choose the 3 traitors. Subsequently, only the 3 traitors, when they meet each other, know who the traitors are. सबको अभी पता है कि यहाँ हमारे बीच 3 ट्रेटर्स हैं, और that's when the fun begins. क्योंकि हर रात एक मर्डर होता है,
और फिर हर दिन सर्कल ऑफ शक में ये मुआयना होता है कि कौन है ट्रेटर, एंड इनवेरिएबली things go either way, because जो innocence है वो invariably they don't get it right कि traitor कौन है, or sometimes they have got it right, but that I wait for everyone to watch. लेकिन हर रात एक murder जरूर होता है, और murder उस तरह नहीं जैसा आप imagine कर रहे हो, it's a virtual murder. Okay. Virtual murder meaning शब्दों से उनको कहा जाता है कि आपकी रिहाई हो गई है, आपका मर्डर हो गया है, चले जाइए, और रातों रात जिसका भी मर्डर होता है उसे अपना बेचारा बैग पकड़ के पैक करके प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है. Immediately they are murdered, and every night there is a murder. All right, so it's a circle. सर्कल ऑफ शक में जो सारे 20 इनिशियली जो 20 थे वो डिस्कस करते हैं कि ट्रेटर कौन है, और वहां सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है क्योंकि मुझे सर्कल ऑफ शक के सिर्फ इर्द गिर्द घूमना है, मुझे देखना है, और मैं जानता हूं सब कुछ, और उनकी लड़ाइयां वो सब एक दूसरे को देख के कह रहे कि मुझे लगता है तू ट्रेटर है, मुझे लगता है तू ट्रेटर है, और ये सारे सब अपने अपनी राय उस सर्कल ऑफ शक में वहां बयां करते हैं. और वो सर्कल ऑफ शक जो है ना, इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, क्योंकि यू एज एन ऑडियंस आपको पता है यू आर इन ऑन द गेम, लेकिन वो लोग जो है ना दे आर नॉट इन ऑन द गेम, तो वो आपको बुरा भी लग रहा है कि शिट व्हाट आर यू सेइंग, नो नो ही इज नॉट, आप you start playing that game, and that's the beauty of traitors, कि the interactive level between audience and show is the maximum. वो आपको किसी और रियलिटी शो में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बेड पे बैठे, घर पे बैठे, जहां भी आप देख रहे हो शो, you start feeling invested in the game, like you start talking back to the game. जब लोग मॉनिटर रूम में देख रहे थे तो सब बात करते अरे यार पागल है, ये नहीं है, ये सच, अरे चुप करो, ये झूठ है. You start interacting. सर्कल ऑफ शक में ये सब होता है. And that's the most exciting part of the show, is the circle of shock. And then जब 3 traitors रात को मिलते हैं और वो जब डिसाइड करते तय करते कि मर्डर किसका है, that is the most like heartbreaking time. और फिर सुबह सुबह मुझे आके उस एक पर्सन की तस्वीर गिरानी होती है, क्योंकि वॉल पे सबके लगे हैं कि उनका मर्डर हो गया है, और फिर उनके चेहरे पे क्रॉस लग जाता है. So, well, तो जून बेसब्री से इंतजार है to get connected to the Yeah. world of traitors. It's a long wait. I have to tell you, for a show like this, it's too long a wait. I know we can't, but we कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है. बेसब्री से इंतजार रहेगा. Thank you so much, Karan. I'm going to request you to please join Nikhil right there at the hot seat. Thank you for spilling the tea. Thank you. Well, as the suspense continues to build, our curiosity is speaking. Well, the traitors is. Up first, he spits fire with his words and moves. It's Raftar! She plays sweet and slays with it too. Jannat Zubair! First, he charms. Then disarms. Sahil Salatia. And she stuns with fashion and fearless flair. One and only Urfi Javed. Welcome to all 4 of you to the first set of players. Welcome. The trailer launch of The Traitors. Raftar, मेरा पहला सवाल आपसे है. With all the dhoka going around, are we going to see a very different avatar and, you know, a cold-blooded shade of you? सर ये जो लैंड है ना, ये धोखेबाजों का है, ये ट्रेटर्स की जमीन है, तो जैसा देश वैसा भेस और जैसा क्रिमिनल वैसा केस. Oh, man of yours. Request to hand over the mic to her. Thank you. Jannat, what is the one secret weapon that will help you survive in such a cutthroat game and filled with backstabbing and out-and-out dhoka? I think my sweet and innocent looking face. People don't think twice before trusting me. And what they don't know is behind this innocent face, there's this person who's always 5 steps ahead of them. So I'm going to play my game, stay calm, and as soon as they put their guards down, checkmate.
Well, she's reinstating the fact looks are deceptive, but wishing you the best. Sahil, like the competition's going to be extremely intense and the stakes sky high. Do you think you'll be able to work your charm on this show? Interesting. Now, I think charm doesn't work. It happens, first of all. But secondly, मेरे को आस्तीन में सांप पालने की बहुत आदत है, so I hope मैं वो escape कर पाऊँ. Because fingers crossed, I think I'm going to be very lucky this time. We wish you the best and Thank thank you you. so much. Thank you. Urfi, my next question is for you. अब ये जो है इस particular group में यानी कि रफ्तार, जन्नत, साहिल, इनमें से आपको सबसे बड़ा खतरा कौन लगता है? मुझे सबसे बड़ा खतरा साहिल लग रहा है. Hey, he's a Sahil. I think Sahil is the biggest threat. हाँ? वो तो हम 12 जून के बाद जानेंगे क्या क्या किया और क्या क्या हुआ है. But wishing you guys the best and thank you so much. Thank you. Let me get the mic from you. Thank you. ये तो सारे के सारे कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं. Up first, she is a rebel who breaks rules as a rule. Apurva. Now, this one is a professional charmer who knows how to play sweet. Karan Kundra. She plays cards for a living and players for sport. Nikita Luther. And he is serving snark and side-eye. Sufi Motiwala. My first questions for you. इस शो पे एक से बढ़कर एक रेड फ्लैग्स हैं, पर आप इस शो की सबसे बड़ी रेड फ्लैग किसे बनाएंगे? I think people just think that being a red flag is about lying, manipulation, and deception. And all of that is true. But to do all of that, you require brains, which unfortunately most of these people don't have. So I don't know if I'm the biggest red flag, but I use more than one brain cell at all times. Well, hard hai. If you could request to hand over the mic to Karan. Karan, what you have to say, and you've been television's favorite chocolate boy. Do you think that will affect the players' perception of you? First of all, good afternoon, good evening, everybody. There's nothing chocolatey or sweet about traitors. Let me just state that fact here. If you think there's anything which is going to be nice and sweet and homely about this show, you're in for a very big surprise. And as Apurva said, it's not about your perception. It's about how you play and how you manipulate. So if these guys are thinking कि ये chocolatey है या ये बहुत sweet है, well, all the best to you guys then. No place for the sweet tooth here. Yeah. Wishing you the best, Karan. If you could hand over the mic to Nikita. Nikita, you make a living off your poker face and and skills. Now, do you think your game at the poker table will help you with your game on the show? Yes, first I want to address Apurva. She said nobody uses more than one brain cell. Darling, I use all of them for a living. And my job is to stay unreadable for a living while reading everyone else. So yes, this game is right up my alley. It might not just be helpful to be a poker player, it might be actually dangerous. Well, thank you for giving us this banter and this appetizer to start with. Sufi, why don't you do what you do the best, is Jesus. rate this group that's sharing the stage with you. Rate it, come on. Everybody's ready? बेशरम, बेहया, बेवकूफ, बगैरत, बदतमीज, बेहुदगिरी, सब कुछ करके आ गए हम लोग. Just kidding. I do not like this question because you want me to be nice, but I play dirty and you know that. And to the media, imagine if Rakhi Sawant and Paris Hilton had a baby. That's what I'm giving on this show. And that is a 10 out of 10, baby. That's a 10 out of 10. We love that concoction. Thank you so much and wishing you guys the best. Thank you. Thank you. Thank you. Let me get them. Rockstar. Thank you guys. Thank you.
His masked entrances have been making headlines for years. Raj Kundra. She is absolutely breaking hearts and breaking the internet. Elnaz Norozi. Scintillating combination of Hollywood flair and Tollywood legacy. Lakshmi Manchu. His strategy hides behind stand up. You laugh and he's already won. Harsh Gujral. She might look calm, but she's got a quiet game brewing under that smile. Anshula Kapoor. Welcome to all five of you and wishing you the best for the traitors. Raj, my first question's for you. How do you think your fellow players will perceive you and what's your strategy? क्या है planning इस game के लिए? जब भी मैंने लाइफ में एक मास्क पहना है सबको यही लगा कि ये बंदा मास्क के पीछे क्या छुपा रहा है एक मिस्ट्री है तो आई थिंक दैट मिस्ट्री माइट हेल्प मी इन दिस गेम ये कलयुग का शो है ट्रेटर्स इस पे पता नहीं चलेगा दोस्त कौन और दुश्मन कौन एक मिनट में यही स्ट्रैटेजी लेके आई एम गोना होप दैट जो मिस्ट्री है मेरे पीछे इट माइट हेल्प मी इन दिस गेम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट करण सर शो होस्ट कर रहे हैं तो वो नेपो हस्बैंड वाला कार्ड तो ज़रूर यूज़ करूँगा